आपका जर्नी में 20 इयर्स में आपने इंडियन, जापानीज, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो यहाँ पे की कल्चर डिफरेंसेस क्या है? As each culture has a different like a thought process. When I worked in Indian organization, more time like the focus is on the task. When I entered the Japanese organization, this is completely different set of things. So they rigorously follow certain process. They think beyond the current generation. And talk about the European, again it's a different cup of tea. So more about the work-life balance, more about the sustainability. So all those things matters actually. आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को लैग कर रही है? But employee engagement is something different. So when I comes to the organization, it is I have come with a purpose basically. Doing the work and performing is a one aspect, and other things which I'll think what is the career development in the organization, what are the tools available. ये काफ़ी मतलब लर्निंग है कि आपको टीम मेंबर के जो सजेशंस है उस पर वर्कआउट करना है और उसको क्लोज एंडेड करना है. So it's a duty of the managers and the others key functionaries to communicate to them. So why we put on hold now? Again, when we are taking it ahead, whatever you talk about, the work-life balance is one of the aspects. So like when we work, we focus on the work, mainly the European style, and when we enjoy the life, we enjoy the life. That's it. तो एचआर जो अब हम लोग को देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, एचआर कम्युनिटी, आप उनको किस तरह गाइड करेंगे? हेलो एचआरस, वेलकम टू आवर चैनल एचआर एबीसीडी बाय द एचआर फॉर द एचआर. और आज हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट. और हमारे साथ है डॉक्टर संदीप शेट्टी जी, जिनका 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, सीजन एचआर प्लेयर, लिंक्डइन टॉप वॉइस 2024-25, ऑनरेबल डॉक्टरेट इन एचआर फील्ड, जिन्होंने इंडियन, जापानीज एंड यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है. तो आज डॉक्टर संदीप जी हम लोग को गाइड करेंगे व्हाट इज़ देयर 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट. तो आज हम लोग डॉक्टर संदीप जी से बात करते हैं. वेलकम टू संदीप शेट्टी जी. संदीप जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे टू गाइड आवर कम्युनिटी. वेलकम टू चैनल एचआर एबीसीडी. Thank you, Sudhir ji. And first of all, I thank HR ABCD team for inviting me to this podcast. So this will be very helpful those who want to like take up the career in HR, or even the mid-level, entry-level professionals who want to become an HR manager or the HR head. So thank you. So let's start the discussion. आपका 20 इयर्स जो एचआर में जर्नी है, तो थोड़ा सा कम्युनिटी गाइड कीजिए कि 20 इयर्स में एचआर जर्नी में क्या क्या डिफरेंस आए हैं, और आपका जो 20 इयर्स पहले जो एक्सपीरियंस था एम्प्लॉय एंगेजमेंट में, और तो आज उसमें लिटिल बिट क्या डिफरेंस बढ़ गया है अभी? See, basically, when I started the career in way back in 2005, so it was more about the policy document, and like just we passed the policy to everyone saying that you follow this one. Mm-hmm. But abhi, maybe the latest one, last 10 years back or maybe the 5 years back, the more focus on the, like we talk about the people, one-to-one talking, understanding each other's views, and then taking the input from the employees with in a town hall or in suggestion box kind of things. And then we take the input and then we gather it, and then when we amending the policies, then we'll incorporate it. So more about the like from the policy to like a people first culture, you can say that. संदीप जी, आपका कहना काफ़ी बराबर है कि 20 इयर्स बैक कंपनीज पॉलिसी बनानी थी और हर एम्प्लॉय को, टीम मेंबर को वो फॉलो करना पड़ता था. लेकिन आज की जो जनरेशन है या लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट देख रहे हैं, जो माइंडसेट शिफ्ट देख रहे हैं, वहाँ पे पीपल फर्स्ट रख के ही ऑर्गेनाइजेशन को काम करना होगा ताकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट बना रहे. संदीप जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जैसे आपका जर्नी में 20 इयर्स में आपने इंडियन, जापानीज, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो यहाँ पे की कल्चर डिफरेंसेस क्या है? व्हाट डू यू फील कि इंडियन मेंटालिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है या जापानीज का ये कल्चर अच्छा है, या
यूरोपियन का ये कल्चर अच्छा है, वो प्लीज़ थोड़ा कम्युनिटी को गाइड करेंगे तो अच्छा हो जाएगा. Okay, that is a good question. As each culture has a different like a thought process. Abhi when I worked in Indian organization, more time like the focus is on the task. Like there will be some task comes, we have to execute quickly. So then and there it. So once the managers or the stakeholders are happy, then everything is okay. When I entered the Japanese organization, this is completely different set of things. So they rigorously follow certain process. So you have to go through AB. Example, I'm talking 1, 2, 3, 4. We have to follow 1, 2, 3, 4 only. And like when I gone in depth, like because I worked almost 9 years for a Japanese company, so they think beyond the current generation. So one of the like event which I attended in Japan. So I was never thought in that direction. Still, were like we are in the day-to-day stuff only. So they talk about the next generation. So that like questioned my thought process also. Be it is a Kaizen, 5S. There are many systems Japanese, and they are on time basically, and the process oriented, and they go depth basically. So I like that culture. And talk about the European, again, it's a different cup of tea. So more about the work-life balance, more about the sustainability. So all those things matters actually. जापान का डिसिप्लिन जो है ना, वो सच में पूरे वर्ल्ड ने देखा है. आज या कल में ही मैंने एक न्यूज़ देखा था कि उनके जो मतलब गेस्ट जो है वो ट्रेन में उनके एंट्री कर रहे थे, लेकिन उनका पायलट उसके पहले ही चला गया. मतलब वो ऑन टाइम चला गया. ही मतलब उसने स्टॉप ही नहीं किया. कोई सेलिब्रिटी है उसके लिए, ही नोज उसका ड्यूटी. आज या कल का ही न्यूज़ चल रहा था. तो जापान ने सच में डिसिप्लिन क्या है, या काइजन है, 5S है. इंडियन मल्टीनेशनल ऑल्सो काफ़ी जगह हम लोग काइजन और वो फॉलो कर रहे हैं. So I just want to add one more incident. So when we are put in a place called Sendagaya, where the head of the HR center was there training. So from there we are traveling to our head office that is in Tokyo. So we are not aware. Actually, I've been the first time in 2016 to Japan along with other colleagues. Other colleagues, they are also first time because they have traveled from Malaysia, China, and other places. So by mistake, we enter to the ladies' compartment. Okay. And nobody told anything. And it was a silence only. By default, it is silence everywhere. So then later we realized that, so we got into the ladies' compartment. So then we get down in the next one, I mean like in the station, and then we spoke to our manager who is a Japanese. Okay. Then he told, yeah, they understand you are foreigners. Although Japanese are very cool and very kind. So these are the experiences actually. And even in the railway station is a pin drop silence. Yeah. और यूरोप का जो बैलेंस का वर्क लाइफ बैलेंस है ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ. तो 5 days वीक जो हम लोगों ने सीखा है या पूरा वर्ल्ड जो फॉलो कर रहा है, वो आई थिंक यूरोप से ही पर्कुलेट हुआ है. 5 days वीक का सैटरडे संडे वाला. So in European organization, this is quite different from the Japanese culture. Whatever you talk about, the work-life balance is one of the aspects. So like when we work, we focus on the work, mainly the European style. And when we enjoy the life, we enjoy the life. That's it. And it is not that restricted to that. And the flexibility. Like for example, if like there is sometimes what happens in some organization, the timing is very strict, like 9 to 5 or 9 to 6 or 8 to 5, whatever it is. So some kind of a flexibility is also there. The flexibility is one of the things which is there in a European organization. And more of the sustainability. They take care of the environment, social and economic. It is the things, more of things, everyone want to extract some different things. So here, what we want to give it back to the community, the society, larger point. It is not just that organization comes, invest the money and take the business. Like make the profit. Not that, not just that. It's an overall improvement of the society. So how we can contribute to the products, if it is which is harms to the environment. So how we can change the raw material and make it into the more sustainable product. So these are the things are in the European the genes basically. In COVID-19 also they banned some medicines in their countries. Almost 65% all world using other medicines only, but European countries, their standards are very high, I think. Yeah, the standard set is very high actually. Yeah, that's true. For them, human is first. संदीप जी आगे बढ़ते हैं. लेट्स से आपने मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, आपने R&D सेंटर्स में काम किया है, कॉर्पोरेट्स में काम किया है. तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस हर
जगह पे डिफरेंट डिफरेंट आपने फील किया होगा, तो आप थोड़ा कम्युनिटी को गाइड करेंगे कि आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को लैक कर रही है या उसको मिस अंडरस्टूड कर रही है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिट इज दे आर थिंकिंग हमारे लोग सब हैप्पी है और वो सब है, लेकिन इंटरनली देर इज डिफरेंट। तो कहाँ पे लैक करे, थोड़ा सा मतलब आप गाइड करें तो अच्छा हो जाएगा। Okay, it's a good question because the employee engagement a very generic. The word is very generic, but how you cascade as a head of the organization or from the top management to the other departments, like whether the R&D or the manufacturing or the other functions, it's quite different. Basically, there are a lot of generic activities like celebrations, hota hai, organization mein, the festivals, all those things. So this is like a short-term excitement. कल कुछ celebration हुआ first new year का or the Christmas. So that will be there for one day. Like after a day, then you will back to the normal mindset only. But employee engagement is something different. So when I comes to the organization, it is I have come with a purpose basically. No, doing the work and performing is a one aspect, and other things which I'll think, what is the career development in the organization? What are the tools available? Suppose if I'm being an HR professional, I want to learn something about the supply chain, something about the finance, or something about completely different about the media. So about the podcasting. Then like we have a platform to learn, which is not just defined by our own area. So that helps for a person who is having some other aspirations, whether it is a hobby, so he can pursue that also. When you take care of these things and the clarity, transparency in communication, whether something good or bad is coming, so it should be communicated very clearly from the top. So then it helps like the people feel fully engaged and do their best. Then the accountability passes on to them. So I will be much aware, like within that 8-9 hours which I spent in the organization, I have to be much consciously I'll use than focusing something which is non-productive. So this is where the the purpose of work should be connected from the organization side. संदीप जी, एक काफ़ी अच्छी बात कही आपने। आजकल की जो एचआरस है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा एचआरस है, उनको लगता है कि फ्री का लंच या ऐसा कुछ स्नैक्स या छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने के साथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज़ समहाउ इतना ट्रू नहीं है, क्योंकि पीपल ऑल्सो नोज दैट कि ये मतलब एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए किया जा रहा है। हाँ, दे ऑल्सो नो ना, मतलब हम लोग कुछ सेलिब्रेशन करें तो एचआर, अच्छा एचआर सामने से सेलिब्रेशन को बुला रहा है, मतलब एचआर सेलिब्रेशन उसका ड्यूटी है सेलिब्रेशन करना। तो डॉक्टर संदीप जी का जो कहना है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट लेवल तभी बढ़ेगा, आपकी कंपनी में कोई भी आपका टीम मेंबर है वो अगर 8 to 9 आवर्स वहाँ पे जॉब कर रहा है या कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, तो वो उसका करियर बनाने के लिए कर रहा है। अगर आप उसको पकड़ के लेट से अलग अलग सेलिब्रेशंस में उसको, अच्छा उसका माइंडसेट भी होना चाहिए ना सेलिब्रेट करने का, कुछ लोग का नहीं होता माइंडसेट सेलिब्रेट करने का। तो आपको एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट लेवल बढ़ाना है, तो आपके फील्ड के रिलेटेड जो अचीवमेंट है उन्होंने किए हैं, कुछ क्रिएटिविटी किया है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग किया है, तो उसको सर्टिफिकेशन, अवार्ड या आप उसका अप्राइजल सिस्टम ऐसा कुछ बना सकते हो ताकि उसका एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट बना रहे। सेकेंडली, आई रियली वांट टू, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे नहीं ये प्रैक्टिस, और जो मैंने फॉरेन कल्चर्स में देखा है, लेट्स से कुछ CXOs है या कोई आपके परफॉर्मिंग लीडर्स है या टीम मेंबर्स है, आपको उसको मीडिया कवरेज देना चाहिए, या अलग अलग मार्केट में क्या उसके अपग्रेड है, तो उसका कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो कंपनी ने, HR ने मैनेजमेंट को गाइड करना चाहिए कि अगर हम लोग को इनको ग्रो करना है तो उसको वो सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वो खुद तो कर लेगा बाहर जाके, लेकिन कंपनी ने उसके लिए क्या किया, उसके ग्रोथ के लिए क्या किया, वो खुद परफॉर्म करके ग्रोथ कर रहा है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, और कंपनी उसको हैंड होल्डिंग लेके उसका ग्रोथ करवा रही है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। इन माय वे, ऐसा अगर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंगेजमेंट होगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ। So organization also handhold the employees, and in turn employees also give back. So because once like they have been taken care, so they will definitely will give back what is the best they can.
संदीप जी एक रियल लाइफ इंसिडेंस या कुछ मतलब ऐसा गाइड कीजिए जहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव लिए हैं टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट एंड नोटिसेबल चेंजेस आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखे हैं कि आपने ये चेंज किया और उसके बाद कुछ एम्प्लॉय के बिहेवियर में या कंपनी कल्चर में चेंजेस आपने फील भी किया और मैनेजमेंट ने नोटिस भी किया और सारे टीम मेंबर उसमें हैप्पी या वो उनका एक लेवल अपग्रेडेशन हुआ वहाँ पे. The way back, I think in 2018, so in my the previous company, we conducted one of the employee engagement. Basically, this is handled by the third party, basically. I mean, like all the survey framework and all those things. But उसमें हमको like around 3 major areas has come for the reflections to improve. Of course, our score was good in compared to all the countries in APAC. But within India, our score was not that much high actually. So there are 3 areas at that time we focused. One is the rewards. Okay. And second one is the infrastructure, infrastructure point. And third one is about the career development. उसमें क्या हुआ था, रिवार्ड सिस्टम था ऑर्गेनाइजेशन में. आई मीन इट वाज वेरी बेसिक. और उसमें भी क्या होता है, सम विल प्ले अ डिप्लोमेटिक रोल. सपोज आपका ये परफॉर्मेंस रेटिंग हैज बीन गिवन गुड, देन ही विल अदर वन हु डिडंट गेट इट, but it is a conflict between the manager and he will be diverted to the rewards. So it's a balancing out. So we found out all those things. And then we made the reward system 2.0, which is to be more instant feedback. See, rewards doesn't mean always the money. It may be like quickly calling you, like, hey, this person has did a good things. Let you go a big hand. This is also considered as a feedback and constant appreciation, correct? And then about the infrastructure. During the COVID time, particularly when the work from home has been adopted, so many companies might have told just work from home. So we gone beyond that, and we helped them the furniture allowances, and we set the things, and many others like the pick and drop from the house to reach, because we have our own safety standards. So we have taken care of everything. And moving to the career development, this is another challenging point and directly related to the performance appraisal. What happens in an organization if your rating is A, B, C, D? Some people will get B, B, C, and it will change also. Sometimes managers also twist this thing. Sometimes the 2 times we're given A, and why we have to give A this time? They purposefully make it B, or it's a vice versa. So somebody who get it constantly A, if you put the same guy on the same bracket of somebody who is getting B or C, or rather sometimes D, then what is the motivation for him? So then we created a separate framework for the fast track employees. Somebody who get 2A for the 2 years or third A for the third year. So then he will be put into the next level. Or given an additional project. Sometimes the next level is not possible because the organizations are very limited, the designation point of view. So you can give additional projects, which may be the cross-functional, or it may be done like another training, maybe in other countries or whatever it is. Yeah. संदीप जी आपने काफ़ी अच्छी बात कही है. अगर उसका स्किल है और ऑर्गेनाइजेशन में उसके कैपेसिटी का उसको काम नहीं मिलेगा, ऐसे उसको ग्रो करने नहीं मिलेगा, तो वो कहीं और जाएगा ही. तो यू हैव टू मेक रिवॉर्ड सिस्टम लाइक दैट वे कि आपके पास जो वी कॉल इट एज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एसेट. अगर आपका एसेट आपको ग्रो करना है तो आपको एसेट को ग्रो करना पड़ेगा ना. उसको ग्रो करने के लिए आपको उतना स्काई इज द लिमिट वाला एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि वो आपके पास ग्रो हो, लर्न करे और ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करे. तो संदीप जी ने काफ़ी अच्छी बात कही है. और दूसरा एक नया मैंने जैसे हम लोग किसी का ऐड तो नहीं कर रहे, लेकिन जैसे हर साल कोई नया एप्पल लॉन्च होता है 15, 16, 17. तो संदीप जी ने कहा कि हम लोग ने अप्राइजल लेवल 2.0. अच्छा, ये 2.0 जैसे इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है वैसा कुछ. अच्छा, ये वेरी फर्स्ट टाइम HR पीपल प्लीज, ये इट कैन बी अ की टेक अवे ऑफ दिस पॉडकास्ट. आपके अप्राइजल सिस्टम का भी 2.0 हो सकता है, जो मैंने आज खुद लर्न किया है. तो संदीप जी बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. लुकिंग अहेड नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, जो ट्रेडिशनल HR प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग 10, 15, 20 साल से कर रहे हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, तो उसमें से 90% प्रैक्टिसेस आई थिंक वो वर्कआउट नहीं होने वाले हैं. तो आपने जैसे बोला कि अप्राइजल सिस्टम का लेवल 2.0 हम लोग ने इंट्रोड्यूस कराया, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट में क्या आज ही से फुट स्टेप लेना ज़रूरी है ताकि
जो ट्रूली ह्यूमन को इम्पैक्टफुल कर सके। सी आज की जो जनरेशन है ना, लेट से 20 ईयर्स पहले आपने जो प्रैक्टिस किया है, तो हम लोग के पास रिसोर्सेज कम थे, सोशल मीडिया का हम लोग को मतलब एक्सेस कम था, या नॉलेज का एक्सेस कम था। आज की जनरेशन है, उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर रहे हो वो तो समझ रहा है, इंडिया में अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करे वो भी उसको सोशल मीडिया थ्रू लर्न हो रहा है, एंड पूरे वर्ल्ड में क्या प्रैक्टिस है वो भी लर्न हो रहा है। तो वो आके आपको क्वेश्चंस पूछेगा अलग अलग टाइप के। अच्छा, हु इज़ आंसरेबल? मैनेजमेंट इज़ नॉट आंसरेबल, यू आर द फर्स्ट वन हु इज़ आंसरेबल। तो ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस काफ़ी चेंज होने वाला है। तो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में क्या, आज से ही जो एचआर कुछ लैडर चढ़ना चाहते हैं, आपके जैसे कुछ कंट्री हेड एचआर बनना चाहते हैं, CHRO VP एचआर बनना चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिस क्या चेंज करना पड़ेगा उनको? From the employee engagement point of view, see, there is always a annual surveys, and some companies will do a like 6 month survey, whatever it is, or 2 years, whatever it is. But this survey is more of a like very generic systems, and one set of common questions will be there. It has been asked across the board, whether it is been the manufacturing, the R&D, or the corp, those things. This will maybe, my feeling, gut feeling, eventually maybe another 5 years or 7 years down the line, it may not have that impact. We need to have a focused discussion group within like say within you can fix a time like 1 week, weekly once the manager should give a feedback to the employee, good, bad, or what are the improvements, and also like kind of a town hall sometimes within the site or within the corp, the region wise, we can do that. I'm like giving the updates or whatever it is. Plus also like hearing from the employees. It is not just hearing from the employees on the suggestion books. These are very token system of the traditional way. What you acted on it. Take all suggestions, put in some different brackets, A, B, C, D. So if there are 4 main suggestions has come, take one, try to implement in the coming year, and take second one in the next year. So like that. So we need to do a framework and taking the feedback from the employees and then giving back like what are the things, areas for improvement, so we can focus on that actually. संदीप जी, ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने, जिसको मैं मेरे लैंग्वेज में कहने लगा क्लोज एंडेड। अगर आपको, एक तो एचआर का काम है कंटिन्यूस लिसनिंग, आपका जो ह्यूमन एसेट है, आपका जो टीम है, उनके जो सजेशंस है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, जो भी कुछ उनका वॉइस है, तो आपको कंटिन्यूस लिसनिंग मोड में रहना होगा। एंड अगर उनका कुछ सजेशंस है टीम मेंबर का, तो उसमें मैनेजमेंट के साथ बात करके आपने उसमें क्या चेंजेस किया है और क्या एप्लीकेशंस लाया है, उसको क्लोज एंडेड भी करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं थ्रू आउट ईयर यू आर टेकिंग ओनली सजेशंस एंड उसमें कुछ एप्लीकेशंस नहीं कर रहा है। ये काफ़ी मतलब लर्निंग है कि आपको टीम मेंबर के जो सजेशंस है उस पर वर्कआउट करना है और उसको क्लोज एंडेड करना है। So this just to I want to add on that. So the credibility will build. Sometimes what happens, we do the survey, whatever it is, and then we'll take the feedback. And something happens in the organization, though we'll put it on hold. So then what happens, the feelings in the minds of the employees, no, like it's a token way of they did it something and they does every year and we give the feedbacks. No, nothing will happen. So it's a duty of the managers and the others, key functionaries, to communicate to them. So why we put on hold now? Again, when we are taking it ahead, rather why we are taking it ahead, and which are the first things we're going to take it, and we have to communicate back to the employees. So then they will understand. So maybe in 100 organization there may be like in a scale in a people of 100 people, they have given 100 suggestions to you, or may say if you put into the bracket, it may come down to 25. So in that, say we are taking like top 10. So why we are going for the first one? We have to address first because that may be connected to the larger group in the organization, and when we are going to take it. So such kind of a transparent communication helps to build the credibility from the senior stakeholders, and also employees also believe, even if it is delayed, why it is delayed, and it will going to come say in next quarters or after 6 months or say after a year. So once people build that trust, they will have a long engagement and they will look for the long term in the organization. आपने जैसे देखा होगा कि सिस्टम रोल आउट्स होता है या मर्जर्स होता है, कोई कंपनी किसी को टेक ओवर कर लेती है, या
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, न्यू सेटअप्स होता है, तो यहाँ पे है ना एचआर का काम काफ़ी बड़ा होता है और हर जगह एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, तो आपको काफ़ी वहाँ पे मतलब केयर टेकिंग लेना पड़ता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में। तो थोड़ा आप कम्युनिटी को गाइड करेंगे कि रोल आउट्स में या मर्जर्स में जहाँ इंटेंस मूवमेंट होता है, तो फिर एचआर का काफ़ी वी कॉल्ड इट एचआर हीरोज़। एचआर हीरोज़ का काम काफ़ी वहाँ पे मतलब बढ़ जाता है ताकि कंपनी सस्टेन भी हो और आगे चलता भी रहे। तो थोड़ा गाइड करेंगे तो अच्छा लगेगा। Sure. So when such kind of mergers or any new things is been launched out or in the greenfield project, then definitely there is a disruptions. So people in HR, they will not say no, we have handled it, there is no disruptions, but there is always a disruptions. Nobody will going to like deny that. But again, I'm coming back to the point which I told earlier. How we'll able to tackle it or like mitigate that risk, that is more important here. So first of all, if any such things happens, first we need to understand why that things is coming up, even for the acquisition or even for the new things launching out. Why? And what is the advantage or what is the use for our employees? So these things needs to be informed or transparently communicated to the employees in advance, so that they also mentally prepared to receive something will going to come. So if today I'm doing X, tomorrow I might have to do X plus Y or X minus Y. Both the things are there. So once they're mentally prepared, so then you will have a next task. So like I'm like during the process, so you can say that. So these are the things has come up. Now you have to take. And sometimes what happens, such merger and acquisition, some roles will be decimated, and some new roles will become. Suppose if I am in some area, so I'm in the head of the HR, for example. So after some time, because due to the acquisitions, the head of the role may run up to the higher up, or maybe decimated because in the new organization there is already an HR. So in both the cases, the communication should be very clear, and so that I'll be much aware, so I can communicate to the down the line also. So this transparency is very important, and how we communicate, the phase wise, what needs to communicated and what need not be communicated also important. Otherwise, what happens? The unnecessary rumors will spread, and employee will get disengaged, and they will also think, like sometimes the high performer will also think, or something is happening in the organization, they will also move out. So what I'm talking about, the mitigate of the risk. So when you talk about all those things, it is good. So you can retain the high performers, and sometimes the people are not doing good. There's a good opportunity to leave the organization and to find where they truly contribute in another organization. This is the key thing. संदीप जी, आपने काफ़ी अच्छी बात कही। यहाँ पे मर्जर्स में या कुछ रोल आउट्स में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में एचआर का रोल काफ़ी बड़ा होता है, एचआर हीरोज़ का। तो लेट्स से संदीप जी ने खुद कहा है कि कोई बड़ी कंपनी ने किसी छोटी या मतलब साइजली छोटी कंपनी को एक्वायर किया है, तो एचआर हेड का रोल ऑलमोस्ट, अगर वहाँ पे भी एचआर हेड होगा तो आपका पोजीशन डिग्रेड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन फीलिंग वर्कआउट है, तो मेरा पोजीशन है और फिर मुझे किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अभी तक एचआर हेड रिपोर्ट कर करके तो बने ना, पहले भी तो आपको कोई सीनियर्स था। तो अच्छा, लाइफ चेंज इज़ द ओनली परमानेंट। तो मर्जर हो या कुछ रोल आउट्स हो, सिस्टम रोल आउट हो, नया कुछ आ रहा है, इंडस्ट्री 5.0 4.0 आ रहा है, या कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लेट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चेंज भी होता है। लेट से ऑटोमोटिव का पहले डीजल पेट्रोल, अभी ईवी आ गया। तो अगर आपको चेंज एक्सेप्ट करना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा ना वहाँ पे। तो लर्निंग इज़ द की फैक्टर। और पूरे ये मर्जर्स और इसमें एचआर का रोल जो होता है ना, वो ट्रस्ट एंकर जैसा होता है। सर ने जैसे कहा कि अगर कुछ हो रहा है तो 3, 4, 5, 6 मंथ्स पहले ही टीम को हम लोग गाइड कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा मर्जर हो रहा है या ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा नया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ताकि हर कोई अडॉप्शन के लिए तैयार हो, ताकि हवाक ना हो कि सडनली कुछ हो गया। और 3-4 मंथ्स आई थिंक एनी प्रोफेशनल्स को काफ़ी हो जाता है नया कुछ स्किल सीखने के लिए, या अगर यहाँ पे मर्जर्स में या नहीं करना है तो स्काई इज़ द लिमिट। आपके पास काफ़ी
ऑर्गेनाइजेशन भी है वहाँ पे। संदीप जी, यहाँ पे आपने जो गाइड किया ना, एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज जो होते हैं ना ऑन पेपर, वो स्टैंडर्डाइज ही होने चाहिए, या हर वर्कफोर्स के सेगमेंट में उसको मतलब अलग अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा? जैसे ये क्वेश्चन मैं किसके लिए कर रहा हूँ कि जो 2-3-5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, या कोई MBA नेचर कर भी रहा है कॉलेज में, तो जैसे बुक्स में कुछ एंगेजमेंट के 5-10 टिप्स दिए हैं, वही तो हम लोग लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना। तो आपको हर टाइम हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंगेजमेंट आपको कंटिन्यू रखना भी है, ताकि वो नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता है। निगेटिव या पॉइजनस एनवायरनमेंट में तो आई थिंक खुद HR भी काम नहीं करना चाहेगा, कि आपकी सारी टीम डिस्टर्ब है फिर भी आप काम कर रहे हो। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, हर इसका अलग अलग से ड्राफ्ट पॉलिसीज होना चाहिए। तो HR जो अब हम लोग को देख रहे हैं इस पॉडकास्ट में, HR कम्युनिटी, आप उनको किस तरह गाइड करेंगे? See, basically, the centralized program will not reach all the level of the employees. Basically, we have to fine tune. There will be some set of questions will be different for the manufacturing, or where the floor level employees are working, and there will be something different for the R&D or the corporate, because each person's the understanding and the maturity level is different, and even the skill set also. Like, see, somewhere in the productions or the entry level, you can say the operators, their background is completely different, and whereas an R&D guy, whereas in the sales, that is completely different. So there would be different framework of questions should be required. But basically, this is difficult also, because for the organization to get the score and match one unique set of questions for across the organization, for them get the rating and compare to the previous will be easy. Once we do this kind of a things, then you need to compare versus the manufacturing rating versus the manufacturing rating of the previous year, corp rating versus the corp rating, R&D rate, oh, aisa karna padega. So there will be some hurdles, because to like the big companies like Aon and the Gallup will have same set of the standards across the regions. But here, like, basically, again, in future somebody has to like identify a new set of questions from the within the organization, and then get the different scores, and we have to see from the different viewpoint. So I feel that is the way ahead. संदीप जी, ये काफ़ी अच्छी बात कही। जैसे एक कपड़े का साइज़ है, क्लोथिंग का साइज सबको फिट तो नहीं होगा। तो HRs का एक्सपर्टीज जो है, हर सेगमेंट में यू हैव टू मेक टेलर मेड पॉलिसीज़, और आपको वहाँ पे खुद रिसर्च भी करना पड़ेगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉजिटिव चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा आपको, या डॉक्टर संदीप जी जैसे प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनसे भी बात करना पड़ेगा, संदीप जी मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। तो और दूसरा क्या है, HR ABCD जो चैनल है उसमें जो कुछ थॉट चल रहे हैं वो भी आपको सुनने पड़ेंगे, ताकि आपको आने वाले चैलेंजेस जो है वहाँ पे आप लर्न कर सको, ग्रो कर सको, एंड प्रॉस्पेरिटी ला सको। आफ्टर ऑल प्रॉस्पेरिटी इज़ द एम हम लोग के HR फर्टर्निटी में। संदीप जी, क्या होता है ना, ये एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट में हर बार वी कांट थॉट और कांट मेक पॉलिसी इन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर फेवर। तो ये जो एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस का, यहाँ पे जो अगर हम लोग थॉट कर सकते हैं तो वो एम्प्लॉय फेवर में ज़्यादा जाता है पॉलिसीज़ मेकिंग में। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिसीज़ भी आपने कुछ डिज़ाइन किए होंगे या वर्कआउट किए होंगे जहाँ पे आपको ये अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मैनेजमेंट का सही ये होना ही चाहिए। अच्छा, आपकी टीम को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय एंगेजमेंट में या एक्सपीरियंस में, लेकिन मैनेजमेंट का या कंपनी कल्चर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिट है। ऐसा कुछ पॉलिसीज़ भी HR को पुट फॉरवर्ड करना पड़ता है या डिज़ाइन करना पड़ता है? Yeah, it depends. Sometimes, as you rightly told, some of the things which HR may not take it as nicely as the others, but from the point of organization vision or the business or from the other angle, so we have to execute certain things. So what happens here, being an HR, you should give your feedback. So this is what going to be. But finally, it's left to the top management to pass it to the down.
But once you pass it, it is the responsibility of the HR and the other managers also. So before passing it or before this thing, so you can express your views. Each persons have their own views and the disagreement, agreement. But once we have decided as we are going out, so we should be aligned and we should take it to the last person. So this is what I've learned over the years. सी इसे मैं जो कहूँगा ना, मेडिसिन हमेशा कड़वा ही होता है ना. तो एचआर का जैसे डॉक्टर का काम होता है बीमारी ठीक करने के लिए थोड़ा मतलब मेडिसिन दे, एचआर का काम वैसे ही होता है. तो जो एमबीए में करियर करने की सोच रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा पॉलिसी भी डिज़ाइन करना पड़ेगा क्या, ताकि मैनेजमेंट का गोल अचीव होना चाहिए. आफ्टर ऑल मैनेजमेंट भी कंपनी की ग्रोथ के लिए ही सोच रही है. तो देयर कैन बी विन विन सिचुएशन, लेकिन वो काम एचआर को ही करना है. संदीप जी, एक कुछ रियल लाइफ सिनारियो इंसिडेंट्स या कुछ ऐसा कुछ आप एचआर कम्युनिटी को गाइड करना चाहोगे कि मतलब आपने ए लेवल पे कुछ टीम को गाइड किया, कुछ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एंगेजमेंट किया, ताकि उन्होंने वो टीम या कोई मेंबर ने काफ़ी 10x ग्रोथ किया और उसके लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए, ऐसा कुछ रियल लाइफ सिनेरियो बताइए ना प्लीज. Yeah, sure. See, there was one case maybe about say 7 years back when we are doing these employee engagement activities. So one of the guy came and asked. So about 2 years back also we did it and nothing much has changed. Now once again we are launching and you people will come with something new. So we used to follow the forms and after that nothing was happening. So that was his thing. And also he has suggested us to make some changes also, because the questions and these formats he could not understand properly. So he was like little bit you can say violent also. Maybe he may not be interested to fill the forms or giving the proper feedback. So we spoke to him. I mean, he's being the head of the department. We told him whatever happened earlier is a different thing. So, but now you again focus and do it. Maybe at some point he may not be that much interested to take our point, but with the repeated things, finally he agreed to take it. And in his department, there was an attrition level was little high. That is related to the pharma and sales related stuff. What I'm talking is, but by implementing that things, though in the first year it was more or less same, the impact was not that much. But over the second and third, the second year last part and the third year, there's a significant dropout in the attrition and the engagement level is also increased. So he has come back to us and told. So he feel happy and he shared this thing. So though initially I was never into this engagement thing, so he was more focusing on his team's KRA and the numbers and the new innovations and all those things. So then he understood employee engagement is also one of the KRA of a manager. It is not just the HR or the management. So the HR and the management will frame out the broadly what is required, but the employee will regularly interact with the managers only, correct? So that's the reason the day-to-day interactions, the culture and all those things start from there, how the managers interact or rather the opposite side. So he has come back to us and he has told. So then we felt within the HR and the others, so something we achieved. So gone ahead and he has moved to the other company and gone to the head of the position and moved to the abroad as well. So this is a nice story. संदीप जी, आप लिंक्डइन में 2024-2025 में टॉप वाइज हो, तो मैं ऑडियंस के ये बताना चाहूँगा और काफ़ी ऑडियंस को मालूम भी होगा, ये टॉप वाइज जो बैच है ना, वो हम लोग बाय नहीं कर सकते ना. ऐसा कुछ 10,000 20,000 दे के बाय किया जाए, ऐसा कुछ थर्ड पार्टी एजेंसी डालो और फिर मुझे टॉप वाइज बना दो करके. तो अगर कोई एचआरस हम लोग को यहाँ पे सुन रहे हैं और जो हमारी ऑडियंस है उसमें से काफ़ी, आई मे बी रॉन्ग, और काफ़ी सारे एचआरस के बकेट लिस्ट में होगा. जैसे हमारा खुद का एक पर्सनल बकेट लिस्ट होता है, वैसे करियर का भी बकेट लिस्ट होता है ना. जैसे किसी को वर्ल्ड टूर करना है, कुछ किसी को स्विमिंग सीखना है, किसी को ड्राइविंग सीखना है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ में जो लिंक्डइन पे एक्टिवली है, तो काफ़ी सारे एचआर का ये एम भी है कि मैं भी टॉप 5 बनूं.
या वो टॉप वाइज का बैच मुझे मिले, तो उसके लिए क्या क्या, मतलब क्या करना पड़ता है, या आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस किया है ताकि उनको भी वो बैच मिले और फिर हमारा एचआर कम्युनिटी ग्रो हो डे बाय डे? This top wise is just happened actually. So I never thought I'll get that batch, and I never even imagined also. What happened was in LinkedIn, I started way back in 2012. I mean, not active tha, but I was been like on and off going, I'm connecting and like posting. Maybe by 2016, 17, I've been like little more proactive in LinkedIn, like putting some updates and all those things, but not regular even. The regular thing which I started in COVID, I mean, like when we have been working from home, like we have sometimes apart from the office work. So I regularly start following few people with their content and all those things. And that time the work-life balance, the mental health was a very important thing. So I was constantly following the people who are talking more on psychological aspects. So with that, I have been like connecting more people and following and started sharing the content basically. I used to reshare the other contents by giving the credit to them only. And I sometimes whatever I got it, I edit it and I also post my own content. So what happened was it was the frequency has increased. And also we tried to help many people. Like at the time of COVID, there are many layoffs has happened. So they are coming to the LinkedIn and open to work. So I used to constantly to help them to putting the CF, commenting for better age and all those things I started. And spent sufficient time in LinkedIn. And that algorithm will catch that also. It is not just like I post something and it will be liked by 1,000 people or reshared. So you will not get the top voice by that easily. So unless you spend significant amount of time, so even in the evening, 2 hours or something regularly. It happened even in Saturday, Sunday also I used to post. So what happened was maybe in 2023, they have come up with some different batch at that time. I forgot the batch. That's not the blue batch actually. So they want to like engage more number of people. But still, I was not talking about not just the HR, many other things of the real life also I used to post there. I think it was in January 2024. One fine morning, like I got the badge. It was as a mail. And initially I thought it's true or not. Because at that time, when they awarded the badge that day, it was flashing for some time and it was not flashing. Because it was not fully server, it's not fully activated. Mm-hmm. So I was just asking my few friends to check whether really I got it. So next day, they told, yeah, you were the blue badge. So I was happy. But with that, the responsibility will even increase. Now, once you become formally recognized as the top voice, so you have to be more to think what to post. And few people have called me also. So no, don't post this, don't post that. So it looks, but it doesn't matter for me. What I felt is truly required for the audience and the knowledge sharing purpose. Whatever I liked personally, I put it straight away. Even if the likes or doesn't likes, it doesn't matter. What is to be told, it should be told. Whether you will take it or not take it, it is up to the people. So with that, the journey has continued. So interacted with the many, like the top followers also. I'm the top voice, other top voice. And many others, like with the help of the LinkedIn. So I connected to the next level. So about the, I mean, like some of the opportunities. All these things will come. Not just the job. I mean, like, other seminars, the associations, maybe the different things. संदीप जी, आपको ये डॉक्टर जो टैग मिला है वो हॉनररी डॉक्टर मिला है इन एचआर फील्ड, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना ऑडियंस को. Okay. So this is also like you can say another aspect. The top voice is another aspect. The doctor is honorary doctorate is another aspect. So normal doctorate होता है ना, आप like you will be registered with the formal institute or the universities where there will be the 5 years program where you will present the thesis and it will be approved by the professors and how it is. But the honorary doctorate what happens is like by looking at the tenure of experience and the depth of the specialist knowledge you are having, some universities will identify and they will send some notification to you. With that, you have to fill up the forms and all those things. And then you have to present what is the core area you were strong and what are the things you did it. So this is more about the non-academic, basically. So that is considered as a honorary doctorate. So I got it from the Dunster Business School, Switzerland. संदीप जी, एक
जो माइंडसेट है आपका, ताकि जो हमारे ऑडियंस है, आपको आपका जो जर्नी आपने शुरू किया तो आप कंट्री हेड एचआर तक आपका जर्नी है, तो कौन सा एक सिंगल माइंडसेट आप गाइड करोगे न्यू एचआर पीपल को कि बाबा ये माइंडसेट रखोगे तो आप आगे जाओगे, एक सिंगल माइंडसेट? So, consistency and discipline. So you feel like what happens in some days you feel like I'm very happy. I love to go to the office. And some days due to the something, so you may not be in the right mindset. But irrespective of that up and downs, we should be consistent, focused, and disciplined. So this is very important. संजय जी, हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे एक आपको सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में उसका आंसर देना है। वन स्किल जो आप खुद इंप्रूव करना चाह रहे हैं आजकल। The data with storytelling. मैन्युफैक्चरिंग एचआर और कॉर्पोरेट एचआर? Corporate HR. एचआर सक्सेस इन योर वर्ड? The impact you created on the employees. बिगेस्ट एंगेजमेंट किलर एट वर्क? The lack of trust and non-communication. बेस्ट एचआर प्रैक्टिस बट आउटडेटेड राइट नाउ? With the annual surveys, will go into outdated in some days. What makes employees stay longer? With the purpose in the work. One quality you look building in HR practices. So empathy with business acumen. What should HR stop doing in the name of employee engagement? The regular stuff and perks. One thing HR professional should unlearn today. So thinking that if policy alone itself take care of the culture, so they have to rethink. One HR initiative you most proud of in your career so far? So collaboration at all the levels. थैंक यू संदीप जी। दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी ही मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल रहा है, और डॉक्टर संदीप शेट्टी जी के जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किए हैं, और आपका मैं यहाँ पे पूरे एचआर कम्युनिटी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाल के हमारे कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए आपने आपके थॉट्स शेयर किया। Thank you, Sudhir ji, for the detailed conversation and some of the tough questions, I can say. Thank you. And if you still have some questions, you can put it in the comment box and we'll going to answer it. Thank you. दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको कुछ यहाँ इस एपिसोड में अच्छे लगा है, वहाँ पे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको और कुछ क्वेश्चंस है, हमारी टीम वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेगी, या जैसे संदीप जी जैसे सीजन प्लेयर हम लोग हमारे पॉडकास्ट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि ये गेस्ट हम लोग अपने पॉडकास्ट को बुलाए, आप वो भी राइट कर सकते हो। तो इस एपिसोड में आपको कुछ कन्वर्सेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम लोग एचआर कम्युनिटी के लिए काम करें, बाय द एचआर फॉर द एचआर। तो आपके जितने भी कनेक्शंस हैं वहाँ पे ये एपिसोड शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और हमारी कम्युनिटी ग्रो हो सके।